What is the advantage? I'm not talking about disadvantage. तुम बताओ. What is your name? Vinay. Huh? Vinay. Vinay. So Singapore is the largest port in the world. There is no alternative port to Singapore. What is so special about that location? That it has the largest world's port. Even New York, Amsterdam, London, they don't have as big ports as Singapore. Why? We don't know. तुम लोग ज्योग्राफी नहीं जानते हो, इकोनॉमिक्स नहीं जानते हो, IIT खड़गपुर जानते हो. IIT खड़गपुर माने से यही होता है. The reason is that all the oil of the world goes to Singapore. Because oil is in the Middle East, and wherever it has to go to Japan, it has to go to China, it has to go to US, it has to go to Singapore. There is no other path. Every other path is more expensive. And Singapore, why does it have the largest port in the world? It's in that route, but in that route there are so many other things. Why this place is so special? You are an engineer, you don't know. Where are harbors built? Where do you have a port built? It's built in a harbor. What should a harbor have? Then only you can have a harbor. Harbor cannot be built out. Harbor cannot be built anywhere in the Bay of Bengal. We have a long coastline. Why we can't have harbors anywhere you like? We need a perfect area. We need a sea. We need land. What else do you need? Perfect depth of sea. Perfect depth of sea क्या है? पूरे Bay of Bengal में कहीं नहीं है. Resources, sea में resource आता है. देखो तुम लोग को मालूम नहीं, साइंस मालूम नहीं. हार्बर के लिए you need shelter. What is shelter? Shelter from the waves. How do you make shelter from the waves? Generally, in Vizag there's a natural shelter. What does a natural shelter do? It obstructs wave from. It doesn't obstruct waves. No. So. It doesn't obstruct waves. तुम लोग को ये भी नहीं मालूम waves कैसे होता है. तुम लोग का नाइकॉन कैमरा होगा, हमारा सब सामान में घर के ज़्यादा से कीमती सामान होगा, और इसको रात को सो रहे होगे कोई इसको पिक पॉकेट भी कर देगा. तुम लोग को सिर्फ दिखावा के लिए IIT में आए हो, दिमाग में कुछ नहीं है. हार्बर्स के लिए स्टॉप करने के लिए टू स्टॉप द विंड. हाउ डू यू स्टॉप द विंड? If there was no wind over the ocean, there will be no waves in the shore. So how do you stop the wind? How does a natural harbor stop the wind? Because. That is what Bombay has. Bombay has a natural harbor. Which other natural harbors do you know in India other than Bombay? Visakhapatnam. Visakhapatnam is natural harbor. How do you know? Right somewhere. You have never been there. Bombay you have been? No. फिर तुम लोग इतना कीमती कैमरा खरीद सकते हो बॉम्बे के लिए, ट्रेन ट्रिप के लिए, तो 2000 रुपये लगता है. क्योंकि बॉम्बे तुमको आके हाथ में नहीं देगा. ये कैमरा वाला तुमको आके हाथ में कैमरा देगा, उसका कमीशन 2000 से ज़्यादा होगा, इसलिए तुमको हाथ में देता है. सो हार्बर के लिए यू नीड अ माउंटेन, यू नीड सम बिग लैंड मास. सो इन बिटवीन अ लैंड मास यू हैव टू हैव सफिशिएंट डेप्थ ऑफ वाटर. एंड you have it in Thames River. Thames River is deep enough. That's why Thames River में London से पानी, ships go all the way to London. London is not on the sea, so the river is deep enough, and there will be no waves in London. But London is not the sea, so sea में तुमको extent इतना ज़्यादा है, जितना ship बैठ सकता है. So many ships can stay, and then the sailors can go and take rest. They can sleep in the city, come back and take the things go. So many ships can come at a time. Such a capacity only Singapore has. और सिंगापुर में they have harbor. तुम अगर सिंगापुर होते तो पूरा जगह कचरा और दारू से भरा होता. तुमको पैसा मिल गया. मिडिल ईस्ट में तो वैसे ही है, सबको पैसा है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है. तुम लोग के पास पैसा आने से यही कचरा होगा, दिमाग में कुछ नहीं होता. सिंगापुर ऐसा नहीं है. वो लोग सोचा we will also make it a tourist capital of the world, we will also make it software capital of the world, we will also make electronics manufacturing, we will make manufacture refrigerators. Refrigerator के लिए कोई हार्बर नहीं चाहिए. All your refrigerators at home are many of them are made in Singapore. क्यों? तुम अगर वहाँ होते तो नहीं होता. तुम जैसे लोगों को बाहर रखा, इसलिए तुम लोग खड़गपुर आ गए. So you are given an opportunity to learn things, to be like Singapore. And ये देखो स्वच्छ भारत क्या है. तुम लोग सिंगापुर स्वच्छ भारत क्या, हम क्यों नहीं स्विच कर सकते हैं? तुम बोलोगे? हाँ,
स्वच्छ भारत करना आसान है कि रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर करना आसान है? जो स्वच्छ भारत भी नहीं कर सकता वो देश कैसे रेफ्रिजरेटर बना सकता है? ये देखो ऐसे ही बोलेगा, हर कोई स्टूडेंट यही बोलेगा, दारू पीने वाला ऐसे ही उल्टा बात बोलेगा, वो बोलेगा नहीं हम कोशिश करेंगे, वो देखो हंस रहा है। कोई इज्जत करता है आईटी स्टूडेंट को? बहुत। ऐसे डिपेंड्स बोलो, हर स्टूडेंट जो फेल करता हमारा वाइवा में, वो वाइवा में शुरू करता है डिपेंड्स से। यस नो आंसर कभी नहीं बोलेगा, उसको मालूम नहीं, यस के लिए भी जानकारी होना चाहिए, नो के लिए भी जानकारी होना चाहिए, डिपेंड्स बोलने के लिए कोई जानकारी नहीं चाहिए। यू आर इन विच डिपार्टमेंट? यहाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज नॉट what aerospace engineering is outside. What is the difference? The brightest people go for aerospace engineering outside, but here the people who go to aerospace engineering only say defense. Why? Because there is no aerospace industry in India. There is not a single thing made in India for an aircraft for which you need an aerospace engineer. A mechanical engineer, chemical engineer, civil engineer can make an aircraft. But which is the main thing in an aircraft which requires an aerospace engineer? बोलो, तुम्हारे डिपार्टमेंट में इसको पढ़ाया जाता है. What are the main things that an aircraft needs, which an aerospace engineer is concerned with? The lift is made by the department. Elevator, जो लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हैं, वो वही एरोस्पेस इंजीनियर बनाता है. What machine does an aerospace engineer do make which is needed by the aircraft? You don't know. It needs the engine and it needs the wings and needs the body. It has to have the shape of an aircraft. If you don't know how to do it, you will never be able to do that. But in India, we don't make any aircraft. So how does it matter? So the people who have the lowest ranks, they go to aerospace. And it is the toughest thing to do in the world to make an aircraft. That is why the brightest go in other countries. People can make. What is the next thing an aerospace engineer can do? Which is the transport of the future. बोलो, transport of the future के लिए what aerospace engineer can do? It depends मत बोलो. Formula 1 racing मतलब. Formula 1 racing is not the transport of the future. The whole population is going to use that transportation. How many people use planes and how many people taking part in Formula 1 racing? I'm not saying that. I'm saying कि How many people? I'm taking transportation of the future like aircraft. Interplanetary transportation. Interplanetary transportation will be done by everybody. How many planets are there where you can go? Interplanetary transportation is not for the masses. For the masses, what will be the transportation of the future? क्या? क्या? Cycle. Cycle तो है. World War I. What are the new methods of transportation which are going to be developed in the future for the masses? That's what I'm asking. What is the future? Nuclear में कोई nuclear bomb को लेके कोई transport कर सकता है? That is what we think. You are arguing. You are not giving the answer. I know nuclear technology. Nuclear technology को तुम लेके transport क्या कर सकते हो? Japan has started. What is it? Has it put nuclear bombs in cars? Not the bombs, it is harvesting the nuclear energy to use. वो सब नहीं होगा. वो उससे भी simple बहुत कुछ है. वो क्या है? What is the simplest form of transportation which is not practiced now, which is going to be replaced, which will replace Formula 1 and your aircraft? Biofuel. Biofuel को plane में भी तो लगा सकते हैं. I'm talking about a device. I'm not talking about a fuel. तुम लोग का general knowledge बहुत poor है. The answer is water transportation. Water transportation is the cheapest form of transportation in the world. How much is the cost of water transportation compared to plane? So they made a JRD, you don't argue. JRD Tata made this statement. I don't think in aerospace also you know this. JRD Tata was the first man who flew a plane in India. You know that, but you don't know what he told. Let me tell you. The same engine which is used in an aircraft is used in a locomotive, is used in a ship. The same engine in a ship can pull 7,000 tons. It can in a ship. A locomotive can pull 700 tons. And an aircraft can put 2.5 tons. So which one?
what is the fuel consumption per ton in terms of percentage? How many times? 2.5 or 7,000 में क्या फर्क है? That is the transportation of the future when fuel runs out. So river transportation, water transportation, sea transportation, that's what ordinary people will learn to use. So if you have a boat, do you have any, what do you know? You know what's a marina? You know what's an airport? You know what's an airport? You know what's a marina? Marina is the equivalent of airport for river craft and ship, ocean going vessels. You are not going to go in a big ship if you are going to go with your family. So that is called a marina. So marina कहीं देखा तुमने? Marina नाम सुना है? Marina Beach, Chennai. हाँ? Marina नाम सुना है? Marina Beach, Chennai. In Chennai. So where have you seen any sailboats there? So, but how will landlocked countries use this water? How did the British come to India? India was a landlocked country. Food is inefficient. It's not inefficient, it saves fuel. तुम जो सिगरेट पीते हो और इतना पैसा कमाते हो, you are very efficient in making money, but you're doing it at the expense of your health. A cow doesn't smoke cigarettes. It's very efficient. It gives you milk. It gives it surplus to you. तुमने अपना surplus किसको दिया? So efficient doesn't mean comfort. Efficient means welfare of you. तुमको स्वच्छ भारत करना नहीं, तुमने किसी को रखा है, उसको हाल देखो, जो साफ करता है उसका हाल जाके देखो, तब तुमको पता चलेगा एफिशिएंसी क्या है। कोई आईआईटी में इतना कचरा स्टूडेंट नहीं होगा जो सिक्योरिटी लोग को ऐसा लाचार करके तुम लोग मस्ती मारते हो। तुम लोग के बस बदतमीजी के लिए इतना सिक्योरिटी को धूप में खड़ा रहना पड़ता सारा दिन, और किसी को कोई शर्म नहीं है कि हम लोग अगर ठीक से लाइन में चले तो इनको लाइन में खड़ा नहीं होना चाहिए। हम लोग को सब कानून मालूम है, हम अगर कानून फॉलो करते तो इनको धूप में खड़ा नहीं होना चाहिए। और तुम बोल रहे हो वेरी एफिशिएंट। ये लोग जाके देखो, सिक्योरिटी लड़कों को देखो, लोग गरीब गरीब परिवार से आता है, अगर कोई गलती स्टूडेंट किया तो उनको पकड़ता है। कभी सिक्योरिटी की मदद की तो कभी उसका बर्थडे कभी जाना कि एक सिक्योरिटी का लड़का कभी तुमने बर्थडे के लिए कार्ड दिया, कुछ दिया? वेरी एफिशिएंट। हम एक क्या, हम 50-50 सिक्योरिटी को जानते हैं। ऐसा आईआईटी नहीं था हम जब स्टूडेंट थे। हम लोग को कोई बोल ही नहीं सकता कि कोई बच्चा पढ़ा है रास्ता में तो मस्ती मारो। तुम लोग का रिप्रेजेंटेटिव को बोलने से बोलेगा हमको पागल है। तुम लोग का हॉल प्रेसिडेंट है, जिमखाना प्रेसिडेंट है, जिमखाना वाइस प्रेसिडेंट है, सब तो स्टूडेंट है। किसकी हम जाके बोल सकते हैं? सब स्टूडेंट को बोलो कानून फॉलो करने के लिए इतना सिक्योरिटी को रोज धूप में खड़ा नहीं होना पड़ता सारा दिन। 8 बजे क्लास हो रहा है, 7:45 बजे से लेके 7:45 बजे से लेके 8:15 बजे तक एकदम भीड़, और सबको मालूम है कि लाइन कहाँ है, साइकिल का कैसे पैदल चलना, फिर भी वहाँ नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी है, तुम एक दिन सिक्योरिटी करके दिखाओ। बड़ा शहर में सिक्योरिटी, बच्चे लोग, स्कूल के बच्चे लोग कोने में खड़ा होके रोप के साथ खड़ा होते हैं। कोई वॉलंटियर करता है? बच्चे लोग करते हैं बड़े बड़े स्कूल, इसलिए वो बड़े स्कूल है। तुम लोग को हमको बताना पड़ेगा, हम भी तो एक स्टूडेंट थे, हमको किसने बताया? ऐसे उन लोगों को खड़ा रहना नहीं पड़ेगा। तुम लोग का कोई आईआईटी स्टूडेंट को नहीं जानते हो जो तुमसे बड़ा है? तुम्हारे पिताजी भी तो तुमसे बड़ा है, वो लोग तो तुमको बता नहीं थे, पता होंगे। यहाँ आके उसका कोई उदाहरण है? जाके देखो किसी एक सिक्योरिटी का जब फुर्सत है उसको बुलाओ अपने हॉल में एक चाय देने के लिए और पूछो उनका क्या है। जिंदगी में कभी नहीं करोगे और तुम बोल रहे हमको पूरा संसार इज्जत देगा। यहाँ का सिक्योरिटी तुमको इज्जत नहीं देगा तो कौन तुमको इज्जत देगा? इज्जत कमाना पड़ता है, डिग्री देख के कोई इज्जत नहीं मिलता। To learn the basics of life. सिंगापुर में पोर्ट है। सिंगापुर इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। सिंगापुर में कितना एडवांटेज है।
disadvantage क्या है? So you should have a scientific understanding of it. That is what IIT is for. And if you want all that, then you have to treat people. You cannot expect security people to teach you how to go on the street. अगर स्ट्रीट में भी चलना नहीं आता, वो लोग क्या सिंगापुर से सीखे? पहले ये सीखो, फिर वो सीखो. आज क्या एडवर्टाइजमेंट दिया कि आईआईटी खड़गपुर बहुत कुछ कर दिया. न्यूज़पेपर हेडलाइन से कुछ होने वाला नहीं. हर दिन एक नया न्यूज़पेपर हेडलाइन आएगा कि हम ये महान काम कर रहे हैं, वो महान काम कर रहे हैं. चिड़िया को जल्दी से जन्म देने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी लोग रास्ते में वैसे ही मरते रहते हैं. हर महीने सिक्योरिटी बढ़ता जाता है. आगे 10, फिर 20, फिर 40, फिर 80. इसका मतलब क्या? वो लोग संभाल नहीं पा रहे और सिक्योरिटी को ये लोग संभाल नहीं पा रहा. और अगर एक एक स्टूडेंट के लिए एक एक सिक्योरिटी होगा तब संभाल होगा. मे बी देन ओनली दैट दे विल स्टॉप हायरिंग सिक्योरिटी. It is a great shame on you educated people that illiterate people who are coming from the village are coming and telling you this is the sign, please follow the sign. तुमको पढ़ाएंगे एरोस्पेस डिपार्टमेंट में, अगर तुमको ये भी